Good morning, children. How are you? And I hope that you all are feeling big, feeling good and happy, fit and fine, and also very happy. I hope that you all are feeling very happy and feeling very good. To see your teachers in the videos, and also children, I want to say you something very special for you, that always be happy and have a big and beautiful smile on your pretty faces, and also always try to think positive, and it will help you, and also it will embellish your personality with lots of beautiful moments, beautiful thinkings and beautiful ideas. So children, let's start the topic of the today. As you know that we have started the chapter from the prose section, and we have already done the summary and theme and discussion of the summary and the story we have already done, and we also know that we have started the explanation of the paragraphs, the story, and so we will continue the explanation of the paragraph in today's lecture also, and we will continue where we have left, and we will start from that paragraph, and we will continue the explanation of the story in today's lecture also. So children, let's start the explanation of the paragraph today. Okay children? So children, we have left the paragraph when the author found that the problem are coming due to the level of water was increasing very fast, and then was increasing very fast, as well as it became very dangerous for them. And also the author found that two electric pump were not in condition to pump the water out of the ship, and also all the parts of the pumps were in not in proper condition. Then what he did, then he remembered that he had another electric pump under the chart room floor, and then he had to connect it to the out pipe, and then he came to realize that I can do, and I can connect that hand pump to the out pipe, so that the water could be thrown out of the ship. And then he was very thankful to himself, and he was very thankful to the God that he found an idea. यानी कहने का मतलब है कि बच्चों, हमने उस पैराग्राफ में छोड़ा था, वहाँ से हमने गए कि जब ऑथर को ये लगा कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तब शुरू होती हैं जब पानी का जो लेवल था वो बहुत बढ़ रहा था और बहुत ख़तरनाक हो चुका था, और वो पूरे शिप में जो है वो नीचे वाले फ्लोर पे ऑलरेडी पानी भरता हुआ भर गया था, और उसका लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा था. देन फिर उसके बाद जो है ऑथर को ये भी लगा कि उसको एक समझ में ये नहीं आया कि अगर उसने पाया कि जो उसके जो दो एक्स्ट्रा पंप जो थे, जो पानी को पंपिंग आउट कर बाहर फेंक सकते थे, वो पंप जो है ऑलरेडी बहुत ही ख़राब, बहुत ही बैड कंडीशन में थे. और जो एक छोटी सी जो बोट होती है, जो नाव थी, जो इमरजेंसी में काम आती, वो भी बिल्कुल जो है वो बैड कंडीशन में थी. फिर अचानक जो है ऑथर को ये ऑथर केम टू रिमेंबर, देन ही रिमेंबर्ड, तब उसको याद आता है कि उसके जो नीचे वाले फ्लोर पे एक ऐसा पंप रखा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक पंप था, और वो शायद जो है वो काम कर जाता. और फिर वो ही वॉज वेरी थैंकफुल दैट ही रिमेंबर्ड दैट इलेक्ट्रिक पंप. नाउ अब आगे क्या था? नाउ चिल्ड्रन, what happened next? Let's know. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine for pumping, steering, and working the radio. We are getting no replies to our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and how she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied,
I did not want to worry when you were trying to save us all. Now in this, and also Mayday calls, let's see the Mayday calls means, children, what is the meaning of Mayday calls? Mayday calls means the words used to signal ship stuck in disastrous situation through radio. Have seen, I think you have seen in TV or any in movies also, कि जब शिप जो है वो बहुत जब खतरे में पड़ जाती है, जब शिप डूबने लगती है, तो पैसेंजर्स को बचाने के लिए जो कैप्टन्स होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो एक इमरजेंसी कॉल्स के लिए मेडे कॉल्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं. ये रेडियो की तरह से काम करता है, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम द कंट्रोल रूम टू द शिप और फ्रॉम द शिप टू द कंट्रोल रूम. नाउ कुछ वर्ड्स जो हैं, जो एक और वर्ड्स कुछ जो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों, जो कि एक सिग्नल की तरह काम करते हैं, एंड दोज वर्ड यूज्ड एज सिग्नल्स टू कैरी इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस टू ईच अदर. Now what happened in this paragraph? In this paragraph, the whole night was about the endless routine. पूरी जो पूरी रात जो थी, and the whole night was about the endless routine of pumping out the water. यानी whole night they are working and pumping out the water and steering the wheel and working the radio. Now here what the poet wants to say that कि पानी बाहर करने के लिए और जो है शिप को कंट्रोल करने के लिए और रेडियो से जो है कनेक्शन के लिए यानी संपर्क करने के लिए जो है वो बिल्कुल ही थका देने वाला जो ये सारे काम थे वो रात भर वो करते रहे. There were no replies to their signals sent over the radio as they were in the remote part of the world. यानी there was no replies to their signals. What author says in this paragraph, that there were no replies, they were getting no replies because they were in the remotest part of the world. उन्हें कोई भी जो है वहाँ पे जो सिग्नल नहीं मिल रहा था, वहाँ पे जो है उनको जो मैसेजेस जो हेल्पिंग के लिए जो मैसेजेस वो हेल्प मांगने के लिए जो मैसेजेस वो कर रहे थे, जो संदेश रेडियो के थ्रू वो भेज रहे थे, उसका कोई रिप्लाई दे वेर नॉट गेटिंग, उसका कोई रिप्लाई वो नहीं दे रहे थे. क्यों? क्योंकि उसका जवाब भी वो नहीं मिल पा रहा था. क्यों? कि इसलिए मेडे कॉल्स यानी मेडे कॉल्स के थ्रू जो वो मैसेजेस भेज रहे थे फॉर द हेल्प, उसकी रिप्लाईज उनको कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा था, कोई रिप्लाई वो रिसीव नहीं कर पा रहे थे. क्यों? क्योंकि they were in the remotest part of the world. यानी वो जो है वो धरती यानी जमीन के बहुत दूर किसी कोने में जो है वो वहाँ पे फंसे हुए थे, और इसलिए वहाँ पे कोई ऐसी बहुत अमेजिंग सी बात नहीं थी कि दुनिया के ऐसे कोने में जाके फंस जाना जहाँ पे सिग्नल नहीं पकड़ रहा, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है, काम कर रही है, तो उनके मैसेजेस भी उनके रिप्लाईज उन मैसेजेस के नहीं पा रहे हैं. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पैराग्राफ चिल्ड्रन. Now, let's move. Now, by morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. Now, we had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few 100 kilometers to the east. One of them, Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and sea abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. Now children, let's see the difficult words with their meaning. Smashed is badly broken. Smashed माने you know that कि badly broken.
कील स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ द शिप। आपने देखा होगा कि जो बेस का जो स्टील से बना जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड कील। एंड पिन प्रिक्स, अ प्रिक कॉज्ड बाय अ पिन। जैसे आपने देखा हो ना पिन को अगर आप कहीं पे हिट करते हो वॉल पर तो किस तरह की जो होल और किस तरह का प्रिक्स बन जाता है दैट इज कॉल्ड पिन प्रिक्स। And the pinpricks in the vast ocean is the two small islands in the vast ocean were very tiny, like the prick caused by a pin. As they have found the pinpricks ocean. They had found the pinpricks was in the vast ocean. Yani they have found small islands in the ocean. On the ocean, उन्होंने देखा कि ओशन में कि दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं एंड दोज आइलैंड्स वेयर जस्ट लाइक पिन प्रिक्स। जैसे आप वॉल पर आप पिन आप उसको हिट करते हो तो एक छोटा सा होल बन जाता है पूरे एक बड़ी सी दीवार पे दो छोटे से होल, बिल्कुल उसी तरीके से दो आइलैंड लग रहे थे कि इतने बड़े समंदर में दो छोटे से आइलैंड्स। नाउ abated something unpleasant to become less intense. An auxiliary engine, small secondary engine used to board ship to operate windlass in the ship. Now children, what author wants to say in this paragraph? Now the author says that the water level was under control by the morning of 3. The water level was under control by the morning of 3. So all of them took 2 hours rest in rotation. But what happened then? But still there was a leak somewhere below the water line. And then what happened? Upon checking, the board rib structure was badly broken down and till the base of the ship. And children, the whole section of the starboard was held together with a few cupboard partitions. Means the author wants to say that कि जैसे 3 जनवरी की जो सुबह थी पंप पानी का जो स्तर था, जो लेवल था वो बहुत ही कुछ देर के नियंत्रण कंट्रोल में आ गया था और वो लोग जो है एक एक करके 2-2 घंटे तक आराम कर ले रहे थे। यानी रोटेशन में जो है वो रोटेशन वाइज जो है 2-2 घंटा सब लोग जो है मिलकर 1 by 1 जो है उनका टर्न आता था आराम करने का, आराम कर लेते थे। और फिर उसके बाद लेकिन अभी भी जो पानी का जो लेवल था वो नीचे से जो है वो अच्छा खासा जो है वो लीक कर रहा था। यानी द लेवल बिकेम लेस बट लेकिन लीकेज जो था पानी का वो अभी भी अच्छा खासा हो रहा था। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब फिर बाद में व्हाट हैपेंड देन, फिर जब ऑथर इंस्पेक्शन करने लगे, जब वो उन्होंने चेक किया तो उन्हें तब ऑथर को लगा कि लगभग जो है वो नाव की जो उसका बेसमेंट है, जो मेन ढांचा जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है जो नाव में जो नीचे आपने देखा होगा कि लंबी सी बनी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टील का बना होता है, वो पूरा जो नाव का एक सारा जो नीचे का सारा जो ढांचा होता है वो जिसपे पूरी नाव जो है वो टिकी होती है, दैट स्ट्रक्चर ऑन विच द होल शिप वॉज on which the whole ship stands, वो जो है पूरा शिप जो है नीचे का जो तलवा जो ढांचा होता है वो पूरा जिसपे शिप जो है वो पूरी तरीके से स्टैंड करता है वो, और वो शिप को जो है परमानेंट और स्टिल रखती है, वो काफ़ी हद तक जो है वो डैमेज हो चुकी थी। यानी ऑन द होल यू कैन से दैट कि द लोअर पार्ट was totally damaged, was totally ruined, was totally smashed. एंड देन व्हाट हैपन, और रियलिटी में अगर कहें कि बाद में इन रियल अगर सच में अगर ये बात करें तो नाव का जो शिप का जो लेफ्ट पार्ट था वो भी उसका जो है जो बहुत बड़ा हिस्सा था नाव का, उसके अंदर से जो है पानी वो वाटर इज कमिंग, और पूरे हिस्से जो है कुछ भी हो, और एक पूरा जो एक स्ट्रक्चर था नाव का वो पूरी होल तरह से बिल्कुल है डैमेज हो चुका था। Now let's move to the another paragraph, children. Now children, on January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. And then what happened? And then and now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the main.
mast. Pressure on the ringing would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. But our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hours, the wind was back to 40 knots, and seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. Now, children, before this, one thing has also happened, that in the previous paragraph, what happened? In the previous paragraph, children, what happened in the January 19, what happened? In the previous paragraph, children, something was happened in the ship. I told you that the ship was very was in bad condition, और जो ऑथर जो था वो बिल्कुल लहर को टकराए हुए जो है वो 15 घंटे जो है वो बीत चुके थे. 15 आवर्स जो है वो वी हैड सर्वाइव्ड, यानी 15 आवर्स जो है वो बिल्कुल सर्वाइव कर चुके थे. एंड व्हाट हैपन, और इसी टाइम जो है वो किसी तरीके से दे वर स्टिल अलाइव. लेकिन जो है वेव वॉकर ने जो था, जो वेव वॉकर, द शिप, द नेम ऑफ द शिप वेव वॉकर जो है वो पूरी तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने की हालत में नहीं था. द वेव वॉकर शिप वॉज नॉट इन कंडीशन टू टेक देम टू रीच ऑस्ट्रेलिया, फॉर देम टू रीच ऑस्ट्रेलिया जाने की हालत नहीं थी. और ऑथर ने नक्शे में, जो मैप में जब उन्होंने देखा, व्हेन द नरेटर सॉ द मैप एंड देन ही कैलकुलेटेड, तब उसने कैलकुलेटेड किया कि वो जो है वो कौन से आइलैंड से जो है वो कितने किलोमीटर जो है वो दूर है, यानी कौन सा ऐसा आइलैंड है जो कि ईस्ट में है और वो 100 किलोमीटर जो है अभी वो दूर है. यानी दे वे फार अवे, हाउ मेनी किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. ईस्ट से वो कितने दूरी पर हैं, मतलब पूरे 100 किलोमीटर्स. और उनको पहुंचने के लिए जो है वो पूरे और जो ईस्ट में 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. वन ऑफ देम पहला है एम्स्टरडैम, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस है. एक एम्स्टरडैम है जो एक फ्रेंच साइंटिफिक सेंटर था, और उनको लगा कि एक छोटी सी उम्मीद है. एंड फॉर देम दैट वाज अ वेरी स्मॉल होप. एंड कि इतने बड़े ओशन में जो है इतना छोटा सा जो आइलैंड जो है वो स्टैब्लिश वहाँ पे है. एंड दे हैव फाउंड दैट आइलैंड, दे हैव फाउंड दैट स्मॉल आइलैंड. तो देन दे केम टू रियलाइज कि द होप वाज स्टिल इन देम, उनके अंदर अभी भी उम्मीद बाकी है. और जो है वो लेकिन हवा की जो लहर थी, जो हवा की जो एक द ग्रेट वेव, बट अनलेस जो हवा की जो लहर थी, जो एक बहाव था, हवा की जो रफ्तार थी, वो उसको कम होने तक, और जो ओशन था उसको साइलेंट होने में या उसको थोड़ा सा शांत होने तक, और इस तरीके से वो ऐसा ना हो कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो जाती, उनकी जो पॉसिबिलिटी थी वो जो है वो बचने की जो है वो कम भी नहीं थी. क्योंकि दे केम टू रियलाइज कि ऑन सच अ बिग ओशन दे हैव फाउंड 2 स्मॉल आइलैंड्स, और ये उनके लिए काफ़ी थे उम्मीद की. And the narrator came to realize the fact that they would be alive. So children, and now and I have read the next paragraph. Already I have read the next paragraph. So after that, what happened? After they found the 2 islands, 2 islands पाने के बाद क्या हुआ? What happened? कि 36 hours continuous जो है वो पंपिंग करते रहे, और जनवरी 4 में जो है कुछ ही मिलीमीटर, कुछ ही सेंटीमीटर was left to the pump out. But they still had to pump out the water which was coming in. लेकिन उनको अभी भी वाटर को पंपिंग करना था. They could not set sail on the main mast. They hoisted the storm jib and sailed towards the 2 small islands. लेकिन यहाँ पे क्या था कि इनको ये था कि वो 36 आवर्स लगातार पानी को बाहर पंप करने के बाद उनका जो लेवल था कुछ सेंटीमीटर जो है वो कम हो गया था पानी का.
लेकिन अब उन्हें क्या करना था, पानी को और भी, जो पानी और अंदर कमिंग इन अंदर आ रहा था, उसको देखते हुए जो है शिप की जो स्पीड थी उसको बनाए उनको रखना था, उसको कंट्रोल भी करना था। और उनका जो मेन जिब था, जिसपे आपने देखा कि यू हैव सीन इन द शिप कि बड़ा सा जिब, एक पाल बना रहता है जिसपे हवा का जो डायरेक्शन होता है वो हवा के डायरेक्शन, जब हवा ब्लो करती है तो वो डायरेक्शन टकराता है एंड देन जो है वो पता चलता है कि हवा जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो उनका जो वो था पाल, उसको भी वो अच्छे से बना सके या उसको भी कंट्रोल कर सके। और फिर इसके बाद वो किसी तरीके से भी जो है वो अपने आप को वो इस सिचुएशन में पा रहे थे कि हाउ कुड दे वुड मैनेज द सिचुएशन। एंड देन व्हाट हैपेंड, उनको लगा कि हमको जो इस तरह के पाल को कंट्रोल करेंगे तभी हम जो है वहाँ पे 2 आइलैंड्स पे पहुँच पाएंगे। एंड दे हैड देयर फर्स्ट मील इन 2 days। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि जब उनको लगा तो, लेकिन जब एंड देन व्हाट हैपन एट 4 PM एंड देन दे हैड देयर फर्स्ट मील इन 2 days। एंड फिर उसके बाद उनको ऑलमोस्ट 2 days यानी 2 दिन बाद जो है उन्हें खाने को मिला। एंड सम व्हाट टाइप ऑफ फूड they had some corned beef and crackers, कुछ जो है वो beef and cracker biscuits found by whom? Mary. The Mary found some what? Some corned beef and some cracker biscuit to eat. And then what happened? फिर उसके बाद क्या होता है at 4 PM, what happened at 4 PM? Now the rest period was very short-lived as black clouds build up around 4 PM. यहाँ पे क्या होता है कि 4 बजे जो है वो ये जो उनके रिलैक्सेशन था वो बहुत देर के नहीं था, और black clouds began building up behind us. यानी the author says that कि again what happened, the black clouds build up around 4 PM. The wind was now 40 knots and the sea was getting हायर, यानी काले बादल जो है वो घिरने शुरू हो गए थे और 1 घंटे के अंदर हवा की जो स्पीड थी वो 40 नॉट्स हो गई, और ऊंची और लहरें जो थी, वेव्स जो थी वो और ज़्यादा जो है वो ऊंची उठती जा रही थी, गेटिंग हायर, और ज़्यादा ऊंची हो रही थी। एंड देन व्हाट हैपन ऑन द सिचुएशन एंड द वेदर गॉट वर्स एंड बाय द अर्ली मॉर्निंग ऑफ January 5 what happened, the situation was bad। और फिर इसके बाद जो अर्ली मॉर्निंग में क्या था, सिचुएशन जो थी क्या थी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बैड हो गई, यानी बहुत ज़्यादा वर्स हो गई, कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई। और कहने का मतलब ये है बच्चों कि रात भर मौसम बहुत ज़्यादा बैड था, बहुत ही ख़राब था, और 5 जनवरी को जब सनराइज़ हुआ तब तक उनकी जो सिचुएशन थी जो है वो दोबारा जो है वो ख़राब हो गई, सिचुएशन बिकेम वर्स अगेन। देन व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पैराग्राफ। Then see another paragraph. Now, when I went into the comfort the children, the Johns asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him, and that we could make it. "But Daddy," he went on, "we aren't afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Sue and I." I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 liters plastic barrels of paraffin. That evening, what happened? That evening, Mary and I sat together, holding hands, as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt end was very near. Now, what happened in this paragraph, children? Now, let's see what happened in this paragraph, children. When the narrator went to comfort his children, then his son asked him whether they were going to die. Then what happened? Now see,
जब ऑथर जो है, जब वो ऑथर बच्चों की हिम्मत को बढ़ाने गए तो उन्होंने अपने सन जॉन से पूछा कि व्हाट हैपन। जॉन ने अपने डैडी से पूछा कि डैडी क्या हम जो लोग जो है वो मरने वाले हैं। देन व्हाट हैपन, व्हाट ऑथर सेड, ही ट्राई टू एश्योर हिम व्हाट, दैट दे वुड मेक इट। His son replied that they were not afraid to die. Why? Till what he believed? What his son replied? His son replied that that they were not afraid to die till they all were together. Till they were all together. You, Mummy, Sue, and I. Now what his son replied? His son replied that that they were not afraid to die till they all were together. Whom? You, Mummy, Sue, and John. Now what happened? यहाँ पे क्या कहता है जॉन कि जॉन क्या बोलता है, लेकिन डैडी वो क्या कहता है कि हमें मरने का डर नहीं है अगर हम सब साथ हैं। कौन? यू यानी आप, एंड मम्मी, एंड स्यू और मैं। Now what happened then? Then the narrator, this filled the narrator with a determination to fight back. He made efforts to protect the weakened starboard side. He used an improvised sea anchor made of heavy nylon rope, and also two 22 liter plastic barrels of kerosene. Paraffin is here. पैराफिन कह सकते हैं केरोसिन, यानी कलरलेस फ्लेमेबल ऑयल लिक्विड. इट इज एन ऑयल लिक्विड, यू कैन से दैट केरोसिन. एंड द सेम इवनिंग व्हाट हैपेंड, द नरेटर एंड हिज वाइफ सैड holding hands, and they believed that their end was near. The same evening, what happened? That same evening, the narrator and his wife sat together, holding hands, and they believed what? That their end was near. Now, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों कि जब उनकी बातों का जवाब देने के उनके पास शब्द नहीं थे, लेकिन जब और उन्होंने अब क्या किया कि जो जॉन ने डैडी से जब ये बात कहा कि हमें मरने से डर नहीं लगता है, तो ये वर्ड्स जो थे, दीज वर्ड्स फिल द नरेटर विथ डिटर्मिनेशन टू फाइट बैक. उनको लड़ने की उसने हिम्मत दी और फिर उन्होंने जो है वो फैसला किया. और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की कि वो पूरी तरीके से स्टार बोर्ड यानी शिप को बचा सकें. और सेम इवनिंग जो है वो एंड बट द मैरी एंड द नरेटर दे बिलीव दैट देयर एंड वाज नियर. Now children, let's move to the another paragraph. But Wave Walker rode out of the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speeds, changes of course, drift and current in the effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 15,000 kilometers of ocean, looking for 65 kilometers wide island. While I was thinking, a swim moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message, "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you, and let's hope for the best. Somehow we had to make it. Now in this paragraph, a very beautiful message, a very enthusiastic message, और बहुत ही thrilled message, बहुत ही enthusiastic and encouraged message जो है वो narrator को मिलता है from his children. What? The ship made it through the, इसमें क्या होता है कि ship जो होता है, the made it through the storm, and by the morning of January 6, what happened? January 6 में क्या होता है, यानी January 6 की morning तक क्या हो जाता है? The narrator tried to get reading to the sextant. He worked with the sextant, means you can say that ki, what is the meaning of sextant? It is an instrument na, with graduated acre of 60 degrees for taking altitudes and navigation.
मतलब सेक्सटेंट का मतलब चिल्ड्रन यू नो दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्सटेंट? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि 60 डिग्री पे जो है वो फिट रहता है, और ये जो है वो एल्टीट्यूड्स को यानी डायरेक्शंस को और जो है वो शो करता है, और ये बताता है कि विंड का जो है फ्लो है, जो विंड का जो ब्लो या फ्लो जो है वो विंड का जो स्पीड है वो किस डायरेक्शन से पे है. दैट इज कॉल्ड द सेक्सटेंट. So what author says that the ship made it through the storm, and by the morning of January 6, what happened on January 6? The narrator tried to get reading the sextant, and he worked with wind speeds. And basically जो main problem थी वो wind की जो है speed थी, and drift and current and calculated, and the author started working on the wind speed, and he started drifting, and he started calculating the position of the winds. And the winds were and the narrator says the winds were 1500, yani winds were 15,000 kilometers areas of ocean, and what looking for 65 kilometers wide island. And it means ki wind was very dangerous, and the wind became very dangerous for the further journey. And then what happened? The left side of the, and then what happened while the narrator was still thinking, and then his daughter Suzanne joined him, and she was in pain. Why she was, and his daughter was in pain. Why? Because the left side of her head was swollen, and his blackened eyes had narrowed down to the slits. उसके जो सर पे चोट, जो सुजैन थी, जब ऑथर ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि विंड को कैसे कंट्रोल करे, किस तरीके से उसके स्पीड को कम करे, तो कैसे मैनेज करे, तभी वो उसकी सुजैन सामने आती है, और वो दिखते कि उसके सर जो है वो स्वेल्ड किया हुआ है, उसकी ब्लैक आइज में काले घेरे पड़ गए हैं. एंड शी गेव हिम अ कार्ड, और वो इस हालत में इंजरीज, वो पेन में जो है, शी गेव हिम अ कार्ड विच शी हैड मेड हरसेल्फ, जो उसने खुद ही बनाया था. उसने एक कार्ड दिया अपने पापा को, अपने डैडी को, जो उसने खुद बनाया था. एंड ऑन द फ्रंट ऑफ द कार्ड, और कार्ड के वो जो फ्रंट कार्ड, एक कार्टून, एंड शी मेड अ कार्टून इमेज ऑफ हर पेरेंट्स विद द वर्ड्स रिटन. What words written? Words written about him being funny people, about being funny people, and what happened, and then and how they made her laugh. And on the side, on one side of the card, and one side of the card, and on the front, on the one side of the card, she told him how she loved them both, and she thanked him. And this made the narrator, the narrator realize that they had to make it to the island. What author says that कि उसने कहा कि जब उसने अफ्तार जो है, उन्होंने क्या किया कि उसने ऑथर को लगा कि जब ऑथर वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द कंडीशन, ऑल द सिचुएशंस, तभी सुजैन जो है वो कार्ड लेकर आती है, उसे कार्ड गिफ्ट करती है. कार्ड में कुछ कार्टून्स क्रिएचर्स बने होते हैं, और वो जो शो करता है कि इस तरह के फ़नी पीपल जो आपको हंसा सकते हैं. एंड द ऑथर रिमेंबर्ड कि हाउ ही लाफ्ड अ लॉट ऑन दोज टाइप ऑफ क्रिएचर्स, एंड ऑल्सो इन दैट कार्ड उसने अपने ग्रैटिट्यूड शो किया था टूवर्ड्स हर पेरेंट्स. So children, and after showing the gratitude, जब वो कार्ड को the narrator came to see when narrator saw the cards, जब narrator ने कार्ड को देखा, then he came to realize that they had to make it to the island. उसे कि no, now अब मुझे तो कुछ ना कुछ करना है उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए. So children, we will stop here. And in next lecture, we will continue the explanation. I think in next lecture, we will finish the chapter. We will finish the explanation. So take care of yourself and family, and always have a big and beautiful smile on your face. So goodbye.